प्रचार करते हैं और कई कई स्थानों पर महाराज जीबीसी हैं, जैसे बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, कॉन्गो, ऐसे कई कई स्थान हैं जहाँ पे महाराज को जीबीसी हैं, महाराज संभालते हैं वहाँ के एरियाज को। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे वरिष्ठ शिष्य और श्री गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुरु भाई हिज होलीनेस कविचंद्र गोस्वामी महाराज जी आज प्रथम बार इस मंदिर में पधारे हैं। तो कल महाराज जी का प्रवचन भी रहेगा, आज शाम को भी है भंडारी बाग में, और कल सुबह भी कल सुबह भी श्रीमद् भागवतम कक्षा रहेगी, और वो भी अटेंड कर सकते हैं। और अभी महाराज के मुखारबिंद से महाराज का गुणगान हम सुनेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवरे पाश्चात्य देशतारणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। It's very wonderful. This is the, but a devotee especially gives up the body, and of course we lament for missing the association. At the same time, it's joyful because someone else has gone back to Godhead. But the one good thing is that devotees come together to speak and hear the glories of a devotee. Very important. So, अभी क्या होता है कि जब कोई शरीर जाते हैं तो हमें थोड़ा दुख होता है कि वो चले गए संसार से, लेकिन वो भगवान के साथ गए और हम लोग को एकत्रित करके गए, हम लोग जो है साथ में रहे। So this is going on all over the world. Where Gopal Krishna Maharaj was so well known and so many great qualities and accomplishments. There could be no end to them. Just go on and on. यहाँ पे पूरे संसार में महाराज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, महाराज के बारे में बताया जा रहा है और उनके सारे गुणों का श्रवण हम सभी भक्त लोग कर रहे हैं। And all of you could have probably much to say. So even if you don't get a chance to speak and talk to each other, keep it in mind. We should remember. यहाँ आप सभी भी एक महाराज के बारे में बोलना चाहते हैं, अगर आपको मौका नहीं मिले तो भी आप एक दूसरे से चर्चा कीजिए महाराज के बारे में और उनका गुणों का गुणगान कीजिए। So many, the departure means many things. One time I was with Bhakti Tirtha Swami, not too long before he was leaving, and somebody had how disciples should be when the Guru leaves. But that's actually described in Scripture, and there are different kinds of disciples. और महाराज बता रहे हैं कि जो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थे उन्होंने बताया कि कैसे भक्तों को एक साथ रहना चाहिए, और ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि अगर गुरु चले जाते हैं भगवान के भाव में लीला में तो उन्हें साथ में रहना चाहिए। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, we'll find out the real nature of the disciple when the Guru leaves. भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जब गुरु शरीर त्याग करते हैं तो रियल परीक्षा होता है कि कैसे भक्त लोग रह रहे हैं। The very good disciple will get closer to the Guru and more determined to carry on the mission. तो जो बहुत नजदीक के जो शिष्य हैं गुरुदेव के, तो वो बताते हैं कि वो कैसे उनकी जो मिशन है, जो उनका कार्य है, उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। And there would be some, the really lowest, that just try to take the property of the Guru or take over, जो बहुत ही निम्न स्तर में है, वो सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा चिंतन करते हैं, वो मिशन के बारे में चिंतन नहीं करते हैं।
So Gopal Krishna Goswami was an example of the perfect disciple, and when Prabhupada left, he just took more because he took on. He was GBC of India, but Prabhupada was there for a while, and he was the real GBC. But all of a sudden, he had it all on his head, even though there was only 5 temples in all of India. महाराज बता रहे कि जब श्री प्रभुपाद जी ने पूरे भारत का जीबीसी बनाया रस गोपाल के गोस्वामी महाराज जी को, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने गुरुदेव के जो मिशन को कंप्लीट करने में पूरा जीवन लगा दिए और उनके मिशन को हमेशा तत्परतापूर्वक आगे बढ़ाया. And it was not easy. वो बहुत आसान नहीं था. And so of course, he was first, when I first met him, he was totally absorbed in the BBT work. सबसे पहले जब महाराज मिले महाराज से, तो वो पहले बीबीटी में थे. So even though we were staying in the same temple in Juhu, I hardly ever saw him because he would go early in the morning and come back late at night for BBT work. महाराज जब आए जुहू मंदिर में, तो देखे थे कि रस गोपाल के गोस्वामी महाराज सुबह उठने के पहले चले जाते थे बीबीटी ऑफिस में और रात को बहुत ही लेट आते थे बीबीटी ऑफिस से. I just remember thinking, well, he's so dedicated. Because I would see the prasadam from the lunchtime, 8 or 9 o'clock at night, still waiting for him. तो उससे बताया कि महाराज सोचते थे कि देखिए कितना डेडिकेशन है कि जैसे गोपाल कृष्ण महाराज. And he never asked for anything. और उस समय महाराज वेट करते थे कि 8 बज गया 9 बज गया अभी तक आए नहीं प्रसाद पाने के लिए. He never asked for any special considerations or anything. उन्होंने कभी भी कोई भी स्पेशल कंसिडरेशन पे ध्यान नहीं दिया. But one thing that comes up is there's many devotees who are aspiring to be initiated by Gopal Krishna Goswami. अभी भी जो है बहुत सारे भक्त हैं वो महाराज से इंस्पायर थे कि उनसे दीक्षा लें. Someone asked me this morning, now how will I get a guru? आज सुबह महाराज से कोई पूछ रहे थे कि हम कैसे गुरु को प्राप्त करें. That's up to Krishna, but when, nobody can ever say. ये सब भगवान कृष्ण के ऊपर है कि जब वो गुरु कैसे प्राप्त करें. But you can always remember that Gopal Krishna Maharaj is your Shiksha Guru for life. तो हमेशा आप याद कर सकते हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं वो हमारे शिक्षा गुरु हैं. And if you're really already following and for a long time, you're very connected. That connection is not material. It doesn't require seeing the vapu in front of you or anything. बता रहे कि जब हम बहुत समय से उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो ये जरूर नहीं है कि उनका शरीर नहीं है, बट हमारा कनेक्शन उनसे हमेशा रहेगा. And the first thing, it's in the Srimad Bhagavatam, Prabhupada said that the guru lives forever and his follower lives with him. तो श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि गुरु हमेशा रहते हैं अपने उनके निर्देशों के अनुसार. So, he gave the same instructions in his will as he gave his whole life. Read Prabhupada's books, cooperate together. महाराज बता रहे कि गोपाल कृष्ण महाराज ने हमेशा ये बोलते थे कि आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए, 16 माले का जप कीजिए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए. And he didn't claim anything as his except his deities, which is okay. Everything belongs to Krishna, but Krishna belongs to me. That's महाराज ने बोले कि सिर्फ जो ड्यूटीज हैं वो मेरे हैं, तो बोले कि जो ड्यूटीज हैं वो भगवान के हैं और भगवान के भक्तों के हैं. And his Rolex watch, which Prabhupada gave him, that's the only reason he's attached to that. And जो रोलेक्स घड़ी था वो श्रील प्रभुपाद जी ने इस गोपाल कृष्ण महाराज जी को दिया. So we can see, this temple is really stunning. It's the most beautiful deity room I've ever seen. बता रहे कि जो मंदिर है बहुत ही भव्य है और जो यहाँ के विग्रह है वो बहुत ही सुंदर है. I was surprised because I'd never heard of it before. You told me you're going to this. I never heard of that there was such a thing. पहली बार मंदिर में आए और पहली बार देखे विग्रह को. But this Gopal Krishna Maharaj, Krishna temples just started manifesting everywhere.
गोपाल कृष्ण महाराज जी के द्वारा सारे मंदिर का उद्घाटित हुआ। But he told me, they're getting so many temples, people want to donate temples, they want to donate property. महाराज ने बताया कि बहुत सारे भक्तों ने जगह दान में दिए, डिटीज दान में दिए। That's India, the pious, rich people, they want to build a temple at the end of their life or something. उधर भारत में जो है बहुत सारे जो है वो बहुत ही पायस के कुल हैं, मतलब कि बहुत ही पुण्य कर्म किए हुए हैं। But he said, बना रहे हैं, जगह दे रहे हैं। but he said that, it's really hard finding leaders, qualified leaders. और ये गोपाल कृष्ण Big महाराज project. कहते हैं कि इसको चलाने के लिए हमें योग्य लीडर की जरूरत है। Of course, he's empowered many young people to take up huge projects, also to do gigantic preaching work. उन्होंने इसके लिए बहुत ही अच्छे से प्लान किया कि जो यंग लीडर हैं उनको आगे बढ़ाएं और इस प्रोजेक्ट्स को आगे लेके बढ़ें। So not only, maintaining a Juhu temple and Vrindavan, which both faced many, many challenges, he just stuck it out. No one else could. जो जुहू मंदिर है और जो वृंदावन का मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, उसको सॉल्व करने में कृष्ण गोपाल कृष्ण महाराज बहुत ही आगे रहे। So I was going to the Samadhi area there in Vrindavan for महाराज japa. वहाँ पे समाधि मंदिर के पास जा रहे थे जहाँ पे महाराज जी समाधि लिए। So there's one Samadhi there, one devotee, his name is Vibhu Chaitanya. वहाँ पे एक भक्त थे, उनका नाम था विभू चैतन्य। And he in the early days of the Krishna Balaram temple, he did everything in the kitchen. He did all the cooking, he did so much. वो शुरुआती दिनों में जो कृष्ण बलराम मंदिर जी में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे सेवाएं करी। And when he got crippled, they had to get 6 devotees to do what he was doing. जब उन्हें ये शिक्षा मिला तो उन्होंने 6 भक्तों को और उसके बारे में बताया। So I was thinking with Gopal Krishna Maharaj, we need thousands. We still couldn't do it. तो फिर महाराज कह रहे हैं कि ऐसे में 1000 जो गोपाल कृष्ण महाराज चाहिए जो इस मिशन को आगे बढ़ाएं। But if all of you, really are determined and you cooperate, you want to please him, then you can have his association. तो इसमें क्या है कि आप सभी को एक साथ रहना है और गोपाल कृष्ण महाराज जी के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाना है और जो भी उन्होंने कार्य करने थे उसको पूरा करना है। The guru goes within the heart of the sincere disciples. जो गुरु हैं वो जो मोस्ट सिंसियर भक्त हैं उनके हृदय में वो निवास करते हैं। So we all know and we're hearing the same thing. He was so kind, he was so concerned about everybody. जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो गोपाल कृष्ण महाराज जो है बहुत ही नर्म थे, बहुत ही दयालु थे और सभी का ध्यान रखते थे। He was very kind to me. Do I say, please come to Delhi? And when you come, did they give you room? Is everything all right? Do you need anything? He was very concerned like that about everybody. तो महाराज का कंसर्न सभी चीज़ों से होता था कि भक्त कैसे रह रहे हैं, उनका कैसे ध्यान रखा जाए। तो महाराज का बहुत कंसर्न होता था सभी भक्तों के लिए। So many devotees have become inspired to do these wonderful things. तो इसलिए हमें बहुत सारे भक्तों को इंस्पायर की महाराज ने जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य सेवा भगवान का कर सके। This is a very beautiful place, actually. तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। Following like Vrindavan, that was Prabhupada's idea. This. तो इस जैसे वृंदावन में जो मंदिर है उसी तरह से इसका ये बनाया गया है। This is more than double big, though. वो बता रहे थे कि ये मंदिर से वो 2 गुना है, बड़ा। Anyway, so such a great person, we can, just see something about how much he's empowered by all these temples in Delhi now. तो ये देखते हैं कि जैसे गोपाल कृष्ण महाराज कैसे सभी मंदिर को आगे बढ़ाए और सभी को empower किया। But then all the books distributed और प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करने में भी बहुत योगदान दिया। and the books produced. और बुक प्रोडक्शन के लिए कि Because he was taking care of all that, and if they didn't get all the books in Indian languages,
उसके बाद महाराज जो थे वो किताब की छपाई में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में और उस पुस्तकों को सभी जगह वितरण करने में। And then Russia, so many devotees, so many books. Not just India. सिर्फ इंडिया एक, रूस में भी बहुत सारे शिष्य हैं महाराज के, And so many disciples all over the world wherever he went. और बहुत सारे शिष्य हैं जो निर्देश देते हैं उसको पालन करते हैं। But he remained as most simple, like a child practically. If you were with him, you'd never think, oh, he's such a powerful, influential person. जब आप महाराज के He didn't feel that way at all. तो लगते हैं कितने दयालु हैं, लेकिन इनका कितना पोटेंशियल है, कितना सब कुछ संभव है, बहुत ही दयालु और बहुत ही नम्र हमेशा है। He was just thinking himself the servant of Prabhupada and trying to fulfill. So Prabhupada had always said we should have so many temples in these cities. He actually did it. We need more and more. Delhi is like unlimited. This is, Sadhu Sangha. We just had a class from here. I was talking to Africa about Sadhu Sangha. So that's the most important thing. So Prabhupada, made a society and he made temples, and Gopal Krishna Maharaj, promoted that, and his will was like follow the GBC. So I've been on the GBC not as long as him, but I've seen we have a lot of ups and downs, and things don't always go perfectly. But we have faith because Prabhupada set that up, and that's why the movement is still going on, because somehow the GBC is still going. So he was a very strong fixture, but he was never up there arguing or anything. He would quietly participate, but when called on, he was brilliant. And he understood that. He understood the world and what was going on in the world of devotees, and he knew how to deal with everything. So it's good to try to remember, the more we hear about this, the more we hear more and more devotees speak. One devotee told me last night he was learning things he never knew. He's been his disciple for many years and working closely, but he said, I'm learning so many things I never knew before. I witnessed the Parthasarthi temple. I have to admit, at first I couldn't comprehend his vision. But I saw this what intense endeavor to get the land from the government. And then to get the plan. Because the government has very strict rules about the use of the land, so the plan had to fit within those parameters.
inspired a very prominent award-winning architect to donate the architecture for him. तो उसके बाद उन्होंने एक जो Would have, otherwise been unlimited money. उसमें महाराज के पास बहुत कम पैसे थे, तो एक आर्किटेक्चर जो डिजाइन करता है मंदिर बनाने के लिए, उससे सलाह की कि आप जो है अपनी जो योग्यता है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। And then to get it built, and collecting donations all over the world. उसके बाद महाराज ने सभी पूरे संसार से पैसे संग्रह किए मंदिर बनाने के लिए। Negotiating with some donors who wanted their name very prominent. इसके बाद जो He talked him out of it. Many years he had to work with these people. उनको उन्होंने उनसे बातचीत की, उनका भी मेरा नाम भी पढ़ाया ताकि वो भगवान के मंदिर बनाने में सहयोग करें। And how he made friends. I mean, he didn't intimidate anyone. He just made friends with so many big government people. And that's one reason he could get so much done. उसके बाद फिर महाराज ने India, you have to have friends. जिन्होंने सहयोग किया वो समाज भक्ति में जुड़े हुए हैं। So even Mr. Modi admired him so much that last night somebody read the letter from Mr. Modi. It was like so eloquent, glorifying his qualities. अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। And then also the chief of all the Sri Sampradaya wrote another extremely, glorifying of such a great Vaishnava. He was admiring him so much. इसी संप्रदाय के आचार्य हैं वो भी गोपाल कृष्ण महाराज के गुणगान कर रहे हैं कि बहुत ही उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। He always offered Mangal Arti on the altar. और हमेशा महाराज जो है सुबह मंगल आरती के लिए प्रार्थना करते थे। And, there's no rule that he has to do that, but it was his own idea. लेकिन महाराज का हमेशा सोचते कि हम भगवान का आरती करें। One time he told me, well, sometimes if I'm arriving like 2 in the morning, I don't do it. He was apologizing that I couldn't. So humble. And then besides that, his own deity worship was so sublime. Many Shalagram, Gaurnitai, Radha Krishna. So if all of you, you're all now chosen to carry on, help keep this temple as nice as it is and make more temples. Because it seems to be it's just something happening now, Every time they build one temple, 2 more will pop up somewhere. So what can I say? You're just very fortunate. He was a gentleman. Someone asked Prabhupada, how can you recognize a devotee? Prabhupada said he would be a perfect gentleman. He's completely polite and nice to everybody. And never asked for himself anything. He told me once, I was having lunch with him, and he told me that he had put some limit on how much they could spend for his lunch. It was like unbelievable, small amount of money. And he had, he could have had anything he wanted. He could have had 20 ladies cooking for him, big feast, but he demanded only just very simple, very cheapest stuff, Simple. So such a powerful person,
but so humble is very rare combination. तो जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, एक साइड और दूसरी साइड बहुत ही गर्म होते हैं, ऐसा ऐसा जो मिलाव है वो बहुत ही कम होता है। But that's the real Vaishnava. जो कि वास्तविक में वो वैष्णव है। He's Trinada Pisani Trinator Krishna. Amanina Manadena Kirtaniya Sadai. Offering all respects to others, but not expecting any in return. तो हमेशा जो है दूसरों को इज्जत दे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि दूसरों को भी हमें इज्जत दे। But then naturally getting so much respect because that's how Krishna works. लेकिन उसके बाद भगवान उन्हें सब कुछ देते हैं। All right, so please, keep in mind, we want to be like him, renounced, dedicated only to carry on the mission, Prabhupada, and back through all the whole parampara, and take over the world. बताने कि हमें जो है महाराज का जो परिचय है उसको पालन करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है इस संसार से रिनाउंस रहें, वैरागी और उनकी परिश्रम का अनुभव करें। Delhi, especially, I've noticed in Indian airports, Delhi, so many people greet, oh, Hare Krishna, please come over here, skip the line, let me help you, where are you going? They really love devotees. And that's the work of, the influence of him and then all the devotees out preaching all the time. And then so many beautiful temples where anybody can come and get sadhu sangha, get sadhu, see the beautiful form of the Lord. And Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. So I hope today I have a translator because I hear all these things in Hindi sometime. I have a little bit, but I don't know what they're saying. Thank you very much. It's a great honor to be here. I had no idea such a place existed. But it's one of the most beautiful temples I've seen. I was noting in Rohini the inside, but this one's much better. Inside the deity room. It's so spectacular. Jai. Haribol. It's Radha Madhava. Radha Madhava ki jai. Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai.